This is a shocking incident which has been reported from Madhya Pradesh, Gwalior, where two men, both bike-borne men with their faces covered, abducted a woman from a crowded bus stand in broad daylight this morning, ladies and gentlemen. The horrific act was captured on a CCTV camera which was stalled nearby. Now, the girl hailing from Bhind district had just stepped out from a bus with family members in Gwalior and she was trying to get into an electric rickshaw when these two abductors kidnapped her. The police are probing the possibility of alleged abductors being known to this girl or the family. The 19-year-old girl abducted by two masked men on this motorbike. You just look at the brazenness of this crime. This is a CCTV footage procured from the petrol pump. And what's more shocking is that these two men, those who they have their faces covered, you can see other people standing there, some young men standing there, getting petrol filled in their vehicles. Nobody even utters a word. That's also another shocking thing. And as far as Madhya Pradesh is concerned, remember the elections in the state, the voting in the state has just completed on 17th of this month. One of the big issues that the Congress and the BJP were sparring against each other on was women's safety. And this, ladies and gentlemen, gives you an idea about what Madhya Pradesh is in fact going through as far as women's safety is concerned. Let's just play out some reactions for you. सुबह की आज की घटना है और इसमें जो भी परिजनों से बात की है तो ये लोग मूलतः भिंड के रहने वाले हैं जो परिजन हैं और वहाँ से ही आए थे, बस स्टैंड पे उतरे हैं और फिर ये मोटरसाइकिल पे दो लड़के जो है इसको लड़की को लेके गए। उनको शंका भी उस पर है क्योंकि कुछ दिनों पहले शायद उनके गांव में भी एक लड़का जो है प्रेम प्रसंग के चलते उनके यहाँ आया था और उसके पे भी कोई प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। तो हम लोग उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके इनकी तलाश करवा रहे हैं और शीघ्र इनको पकड़ें। और उनके गांव के जहाँ मूलतः रहने वाले हैं वहीं का एक लड़के का नाम आया है जो पहले भी इस तरह का कुछ प्रयास वहाँ पे भिंड में भी कर चुका, घर पे आया था और इस तरह की बात आई। सुबह बच्ची गांव से आ रही थी बस में, सुबह तो यहाँ 9 बजे 9:15 बजे करीब पेट्रोल पंप पे वो उतरी यहाँ पे तो दो लड़के आए पे मोटरसाइकिल से। हम उसको लेने आए तब तक वो मोटरसाइकिल पे उसको जबरदस्ती पकड़ के बैठाए, वो उतरने की कोशिश करी तो उसको दोबारा पटक लिया और उसको लेके चले गए। कहाँ से आई थी बच्ची? इधर गांव से आई थी, लाहौर से। यहाँ पे क्यों आई थी? हम अपने यहाँ बुलवाया, कार्यक्रम था हमारे यहाँ। Ladies and gentlemen, before I go to my colleague Amritanshi, who is joining us from our sister concerned, our news channel, the local news channel in MP and Chhattisgarh, I just want to play out and read out, in fact, some numbers for you. This tells you the story of Madhya Pradesh. The NCRB data of 2021 says that there have been 6,462 incidents of rape. That is most in any state. That's the last data of the NCRB. And 2021 put Madhya Pradesh right at the top of this infamous list. 50% of these rape cases in the state of Madhya Pradesh are against minors. 18 minors are raped in the state of Madhya Pradesh or were raped in the state of Madhya Pradesh every single day in 2021. I want to supplement this with another, in fact, data that it's very, very important for all of us to, in fact, take a look at. Just take a look at this. In 2019, if you look at this data, in India, there have been 3,42,168 women, those who disappeared. 82,084 were girls. In 2020, there have been 3,44,422 women missing, disappeared, abducted. 79,233 were girls. 2021, 3,75,858 women have been missing, abducted, or in fact disappeared as far as this country is concerned. 98,113 have been girls in this, in fact, in these numbers. It tells you year on year the crime against women, the number of women missing are only increasing. For the states with the worst track record, as per the NCRB data, Maharashtra in terms of the missing girls, 56,498 at number 1, and followed very closely by Madhya Pradesh. 55,704 women have been reported missing in the state,
followed by West Bengal 50,998, then Odisha, Rajasthan, Delhi, as far as the NCRB data is concerned. Now, this is a really shocking, in fact, data. Let me go across to my colleague Amritanshi. Amritanshi, इसमें अभी क्या कुछ आगे अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चल पाया है? क्योंकि जो पुलिस का बयान आया है वो भी बहुत शॉकिंग है. मतलब पुलिस कहीं ना कहीं ये बात कहने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो जानते थे तो क्या इतना बड़ा क्राइम नहीं है. अगर कोई किसी को जानता भी है तो उसे इस तरीके से अपहरण करने का थोड़ी लाइसेंस मिल जाता है. You were telling about the numbers, that how many women or girls are being missing in Madhya Pradesh. Women especially were considered as the core and the queen voters of Madhya Pradesh. Both the political parties, BJP and Congress, were promising for the freebies in Madhya Pradesh to the women. But no one was promising a good law and order system in these cases. This incident in Gwalior today happened in the morning at around 8:50 a.m. When a girl, she was a 19-year-old girl, and she came with her family, and she stepped down from a bus and she was just standing there. Two people came on a bike and they forcefully took the girl with them. One of them was wearing a helmet, and the second man, he was covering his face with a cloth so that they couldn't be identified to the people. This whole incident but has there was been any recorded in the update on this? CCTV I mean, camera. have the police been able to identify these people? Is there any headway as far as this case is concerned? Police is just searching the two men, and allegedly who has been, they are already saying that this could have been a case of abduction, and there could be a connection of the girl with the two people who have allegedly abducted her. The police is now following the CCTV cameras and the footages of every places, and they are like following the cameras and just trying to find the men who have been, who has abducted the girl. Amritanshi, thank you so much for joining us with all those details. But joining me at this moment, Roli Shivhare. She's a women activist from Madhya Pradesh. We are also being joined by Mr. Shashikant, former DGP Punjab. I welcome both of you on the broadcast. Before I go to Roli, Mr. Shashikant, I want to understand from you, sir, what is this inference that somebody was known to her and there could be, a relationship or prem prasang, as the officer was saying at that moment, sir? I find that also utterly shocking. Even if somebody is known to someone, does that make the job easier? What is the police trying to insinuate, sir? Whatever the police is saying, that's utter nonsense, absolute nonsense, and nothing else. And what shocks me more is that this particular sad incident has happened. We all will get together, we'll condemn it, we'll howl over it, we'll cry over it. But the question is there any person who's going to rope the police, who's going to question the police, whether it's the political leadership or whether it's NGOs or people's movement? You gave lots of data. One data I'll give you, it is from Deccan Herald, 21. It says in 21,21,755 cases were registered, 23,243 ended in conviction, 60% acquittal. और बाकी केसों का भगवान जाने, whether somebody is sleeping over it or somebody is taking a bribe or whatever it is, they are still, what we say, under investigation. Now, this is the state of affairs. We have got all sorts of national commissions. Commission against women, commission against children, commission against atrocities, this, that. Why no commission is taking any cognizance of these things? Why people are not getting up and saying, hey, we're not going to tolerate this nonsense because tomorrow nobody knows whose family is going to get suffer. So this is the state of affairs. My submission is, yes, I'm howling over it, I'm crying over it, but I wish that this is about the time when people just get up and say, enough is enough, no more nonsense, thank you. रोली शिवहरे जी, ये जो अभी पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल गुत्थम गुत्था होती दिखाई पड़ी. उसके चुनाव होने के आज हम 3 दिन बाद खड़े हैं और इस तरह की घटना मध्य प्रदेश से सामने आती है. दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कटघरे में नहीं खड़ी हैं. क्या पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को शर्मसार नहीं होना चाहिए? किस तरीके का एक राज्य है जिसमें लोगों को डर ही नहीं है, किसी को कभी भी उठा के ले जाओ?
देखिए, ये तो मतलब बहुत दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की बात को मुझे लगता है कि दोनों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब हम मैं एक उस ग्रुप से एडीआर करके एक ग्रुप है, मैं उनसे भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे लोगों को भी टिकट दिया है जिनके ऊपर खुद क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं और सीरियस क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। तो जब एक बात ये सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जब ऐसे लोगों को अगर टिकट दे रही है तो भी अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि वो क्या उम्मीद करेंगे। अगर ये लोग जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सरकार बनाती है तो वो क्या बनाएगी और क्या वुमेन के हिसाब से चीजें करेंगी। एक तो पहली बात मुझे ये लगती है कि जो कि अपने आप में बहुत शर्मनाक जैसी चीज है, क्योंकि बार बार हम लोग एडीआर के तौर पर उनसे बात कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिए कि जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। जैसे कुछ एक दो ऐसे कैंडिडेट्स भी हमें मिले जब हम मध्य प्रदेश का एनालिसिस कर रहे थे, जो लोग इलेक्शंस लड़ रहे थे, कि जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन तक के केसेस लगे हुए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे। और जहां तक आपने जो फ्रीबीज की बात की है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मतलब महिलाओं को लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, इस प्रकार की बातचीत जरूर कर रही हैं। और अभी मध्य प्रदेश में तो अभी रिसेंटली बीजेपी की सरकार रही है, और अभी जो कांग्रेस की सरकार ने अभी ये कहा है अपने उसमें कि वो भी उनको फ्रीबीज देने वाली है। तो दोनों ही सिर्फ फ्रीबीज दे रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। एक और चीज मुझे अभी मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये कहनी थी कि बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने एक कैंपेन चलाया था, अभिमन्यु अभियान। कुछ ऊर्जा डेस्क भी जो महिलाओं, स्पेशली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए प्लान की गई थी। लेकिन योजनाएं तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि आप अभियान और योजनाएं चला लेते हैं, लेकिन आपको भोपाल या बड़ी सिटीज के में लेवल में कई बार कुछ चीजें दिख भी जाती हैं, लेकिन ग्रास रूट पे ये कोई भी चीज आपको चलती हुई नहीं दिखाई जाती। लेकिन ग्वालियर तो बड़ा एक शहर है, और जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो शहर जो जिस लोकेशन पे ये हुआ है, ये बहुत प्राइम लोकेशन है। इस लोकेशन पे पास में एकदम थाना बिल्कुल लगा हुआ है, ना लोग कुछ कह रहे हैं ना पुलिस का कुछ है। तो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। This is also a very disturbing aspect, Mr. Shashikant. Yes, we can go on lamenting the police. Primary responsibility is of the government and the police. But what I find utterly distasteful as well are these people, those who are just standing there, young men, and just not one or two, there are 4-5 young men that I can see in this CCTV footage. If one of them would have just stood up, possibly the situation could have been different. It is also the apathy that we as the society are completely under. Sir, these mute spectators can and should also be booked. It is a sort of abetment. If a person is seeing, if a crime is being perpetrated and people are just looking at it, they become accomplices one way or the other. I don't know, I have no data to show whether any of such persons were arrested or any case was registered against them, but till such time this step is taken, the so-called mute spectators, they are also not booked under relevant sections because it's a kind of abetment. They're just observing and this and that. I don't think situation is going to improve anyway. Sad state, but sorry. रोली जी, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो मैंने आपसे शुरुआत में भी ये बात कही थी, महिलाओं की जो स्थिति है, हमने उस पर कुछ डेटा बताया कि किस तरह मध्य प्रदेश जो है उसमें बड़ी शर्मनाक हालात हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? 18.5 साल सरकार रही है शिवराज सिंह चौहान की, 1.5 साल बीच में कांग्रेस की भी सरकार रही है। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर सरकार का एक पॉलिटिकल विल जो है वो ही इतनी ज्यादा नहीं है कि लोगों को इस तरीके से जागरूक किया जाए, पुलिस को इतना मुस्तैद किया जाए कि वो इस तरीके की घटनाओं को रोक सके? नहीं, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि पॉलिटिकल विल जो आपको दिखता है ना, आप जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ही देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई हैं। लेकिन जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, अभी ये आप किडनैपिंग का देख रहे हैं, कुछ महीने पहले एक बहुत माइनर के साथ एक रेप की घटना जो आपके स्क्रीन में फ्लैश भी हो रहा है। तो लगातार माइनर्स के साथ रेप की जो घटनाएं हैं, और अगर एनसीआरबी के पूरे 5 साल या 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड भी उठा के देखेंगे तो भी मध्य प्रदेश में यही स्थिति है। 18 साल से तो बीजेपी की सरकार है और 1.5 साल तो कांग्रेस की सरकार ने ज्यादा तो कुछ किया नहीं उसमें। अपने आप में वो भी एक अपने आप में वो भी, अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए अब जो भी सरकार बनती है, ऐसी पोजीशन में कौन महिलाओं के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है मध्य प्रदेश में। और मुझे लगता है कि अब सरकारों को भी शर्म आनी चाहिए कि यार हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लगातार हम उसी पे चल रहे हैं, मतलब कोई कहीं कमी नहीं आ रही है। जब सरकार से बात करो तो उनका ये कहना होता है कि अब महिलाएं केस रजिस्टर करने लगी हैं, इसलिए ये आंकड़े बढ़ रहे हैं।
लेकिन मतलब जी। रजिस्टर करना तो उनका राइट है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रजिस्टर अभी भी रजिस्टर नहीं होते हैं केसेस, तो नहीं, वो जैसे दोनों ही शशिकांत तरीके जी की बता रहे चीजें थे, that's very important. It just doesn't end at registering more cases. How many have you been able to take to logical conclusion is also the responsibility of the police. How many end up in conviction does tell you of how good policing or how thorough the investigation has been in any case, and that possibly is the only deterrent. Thank you so much to both my guests for joining me at this moment. But no matter how many Ladli Behna Yojnas or the opposition also coming up and giving out, doling out money as far as women are concerned, they are voters, but before that, they are citizens who need protection, and that's the basic responsibility of the state.